Yep, you guessed it right. गेस तो खैर क्या ही किया है, थंबनेल में था और पहले ही बता दिया था कि रिएक्शन वीडियो आने वाली है। सुपर किक स्टूडियोज नाम का यूट्यूब चैनल है, एक ऐसी वीडियो जो कि सबसे ज़्यादा रिकमेंड हुई थी, ब्रिलियंस ऑफ जॉन सीना। विल सी के इज जॉन सीना एक्चुअली ब्रिलियंट, विल फाइंड आउट। एंड बाय द वे, वीडियो का और चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, नहीं देखा तो जरूर जाके सब्सक्राइब करो यार। Alright, so we are in the world of brilliancy, John Cena, and let's see. Thankfully 14 मिनट्स की, I really hope कि इसके ज़्यादा पार्ट्स ना बनाने पड़े, बिकॉज लंबी बन गई वीडियो तो 2 पार्ट्स में निकलेगी। एंड साथ ही साथ अगर कुछ इसमें कॉपीराइटेड कंटेंट रहा तो उसको मैं ब्लर कर दूंगा, तो क्योंकि इंडिया का रूल अलग है ना, इंडिया में अगर आप थोड़ा सा भी दिखा दोगे काट दिए जाओगे। सो या लेट्स स्टार्ट ब्रिलियंसी। जॉन सीना के लिए हम रेडी है, क्लियरली आई एम रेडी। So yeah, let's begin the journey, baby. Alright. The John Cena trumpets theme song for Olympics. Here we go. My favorite wrestler of all time. My childhood hero. The guy who made me into a wrestling fan. The guy who, whenever I heard basic thugonomics, I turned into a gangster. The guy who got me a citation in elementary school. John Cena. वाह, मतलब मैं जब बचपन में था मैं गैंगस्टर नहीं बना था, मैं तो कुछ और ही बन गया था। He was our generation defining star. He was our superhero. He was the Roman Reigns of that century. He was that one person that we're gonna look at years and years from now, and whether it's the time is now playing, and he would come out and drop bars on people. As a kid I remember कि John Cena is just always getting his ass kicked. एंड फिर भी वो बंदा जीत जाता था। लाइक जॉन सीना वाज दैट गाय कि आप उसे कितने ही मार लो, आप चाहे उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दो, ही इज गोइंग टू विन। दैट्स जॉन सीना फॉर मी, दैट्स द डेफिनेशन। Only thing I cared about was what was John Cena gonna do this week. Every time I saw this face, my life was lit up with joy. I'm sure I think I should have watched during this thugonomics era, बिकॉज ये तो सब मैंने डीवीडीज में ही देखा। जब मैंने देखना शुरू किया था तब तक तो भाई वो अपना यू कैंट सी मी वाला जॉन सीना, नया वाला जॉन सीना आ चुका था। सो आई थिंक यस, मेरे को थोड़ा और पहले पैदा होना चाहिए था। बैड टाइमिंग। Oh yes, WrestleMania 20 yes. And I loved all of it. Week by week you felt it. Bro, John Cena and JBL की rivalry, I think मेरे को लगता है कि like जो आजकल लोग कहते हैं ना कि ओ माय गॉड दिस हील इज सो अंडर अप्रिशिएटेड, आई थिंक JBL वाज दैट गाय। लाइक उस बंदे ने लिटरली बनाया जॉन सीना को। ही वाज सो एस कि जॉन सीना अपने आप ग्लोरीफाई हो गया था। JBL's punk ass was gonna get beat and it was gonna be John Cena's first world championship. And he did just yes, that. I remember that. It was goodbye JBL and hello John Cena. It was his time to carry the company. True. And carry the company he did. इवन तो JBL का रन भी ज्यादा बड़ा नहीं था, आई थिंक वो 2004 से 5 तक का ही था। सो आई डोंट थिंक सो JBL वाज सेइंग गुड बाय, बट आई गेट इट। From this point onwards, John Cena was the face of professional wrestling. We were so happy. ओके, सो जॉन सीना के केस में हम लोग कब खुश हुए थे? लेट मी थिंक। आई थिंक जो मेरे को क्लियरली याद आ रहा है, आई थिंक वो जॉन सीना का रॉयल रंबल का रिटर्न, वो तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिंस के वहाँ पर रिपोर्ट्स भी नहीं होती थी तो हम सही में बहुत ज़्यादा शॉक थे कि ओह ये क्या हो गया। I get chills just talking about it now. One thing I'm gonna say, and this might get me in some trouble, was I love the spinner belt. Same. भाई आजकल पता नहीं क्या हो गया, लोगों को एक फैशन चल गया कि अरे स्पिनर वाली तो भाई मेरे को तो वही फेवरेट लगती है। लाइक आउट ऑफ एवरी WWE चैंपियनशिप आई नो कि लोगों को ईगल वाली भी पसंद है। आई थिंक उनका नॉस्टैल्जिया भी जुड़ा हुआ है, बट भाई फेवरेट मेरी यही थी, स्पिन हो या ना हो, बट वो जो डिजाइन था आई थिंक दैट वाज द बेस्ट फॉर मी। Championships, I don't think of this or this, and as Same. beautiful as they are, आई थिंक जनरेशन की भी बात है ना, कब आपने देखना शुरू किया तो बनता भी है। My mind immediately turns to the spinner. I thought I was really funny in 2006. Okay, I still think that, by the way. 6, I believe it was an episode of Raw where he told Chris Masters that his master was smaller than the nano iPod, and I thought to myself, English तो खैर घंटे ही समझ आ रही थी हमको उस टाइम पे, तो मैं तो क्या ही बोलूँ उसके बारे में। That's genius. I'm gonna use that at school tomorrow. To the office I went, okay. But it's a memory that I can share with you guys now. Yep, that's back cringe. at it, you're like, man, I had such an obsession with this dude that I landed myself into trouble with the principal.
Like, come on. घंटा फर्क नहीं पड़ा वो. What is this principal doing anyways, right? मतलब अपने ऑफिस में बैठकर बस उनको झाड़ना होता है और कुछ नहीं होता. And they are not going to fire you for saying some shit. कर भी देते हैं, क्या करें. बट नाउ आई रियलाइज कि यार बोलना चाहिए था उस टाइम पे. कुछ फालतू में ज़्यादा ही शाय था मैं. क्यों डरता था मैं. हाँ यार, पैसे हम दे रहे हैं, डरे भी हम भाई. ये बड़ी अच्छी बात है. So cool. We wanted to replicate everything he did. I remember the days where you'd get a new SmackDown vs. Raw game, and the first character you picked had to be गेम John तो Cena. खैर नहीं था When we were मेरा in our कुछ भी. class, it had to be something about John Cena, the spinner. When I picked a jersey number in gym class, I ain't afraid to admit it, I took 54. The same number that was on John Cena's back. John Cena was everything at this time. Everyone. 54 का मतलब क्या था by the way? When he moved to Raw, my Mondays got But he was not larger than the Great Khali, by the way. even better. He'd grab the mic and start spitting fire. He was simply. I was not a huge John Cena guy. I was a Batista guy. But इसको देख के लग रहा है कि यार था वो भी दिन. क्योंकि जॉन सीना का भी हमने ऐसा तो नहीं कि जॉन सीना के आते हैं और भाई नजरें फेर लो भाई साहब, तो हमें देखना ही नहीं है. My superhero. He was unbeatable. No one could touch this dude. New Year's Revolution. Yep, Edge का John cash Cena in. went through a grueling elimination chamber, and he looked like he had just raided a ketchup section at Walmart. He was a mess from top to Yeah, bottom, and I outdid love Edge it. to cash in the Money in the Bank. It was at this moment where I started to hate Edge. Same. Everyone Cena feuded with. हर Shawn कोई, Michaels, हर कोई. Edge, Batista. For some reason सीना और माइकल्स में मेरे को हेट नहीं आई कभी माइकल्स के लिए. पता नहीं क्यों मेरे को लगता था कि हाँ ये दोस्त हैं, थोड़ी देर के लिए लड़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लड़ेंगे फिर हट जाएंगे, दोस्ती बरकरार रहेगी. पता नहीं मेरे अंदर से था ऐसा. ऐसे जब जॉन सीना जेफ हार्डी का मैच हुआ था तब भी मेरे को ऐसा लगा था. A lot of people say a lot of unnecessary things about Cena, but the simple fact is no one on that roster would have been able to carry the PG era as far as Cena did when that transition was made. That's controversial. I think Batista का भी मेरे को लगता है कि हो गया था क्योंकि वो 2008 तक ही था वो जो हाइप था ना. उसके बाद आई डोंट नो पता नहीं किस वजह से डिक्लाइन हो रहा था, बट देयर वाज सम डिक्लाइन दैट वी कुड सी राइट देयर. So I think John Cena was the right guy. The You Can't See Me became recognized worldwide, and even LeBron hit it. When people thought WWE, they thought Damn. Cena. The way he took That's mantle the from mainstream, WWE bitches. and ran with That's it the is hard to mainstream. put into words. He was everywhere. He kept WWE's name alive in the mainstream media way longer than it had any right to be. The only ones who don't agree with this are the people who are here to genuinely troll. You mean all the Twitter fans and Reddit fans? Shows, rap album, memes, movies, getting stabbed, you name it, Cena has done it. And some people still don't want to admit just how much of a GOAT he is. Legendary athlete who's never gonna be replaced. What is this? By the way, I don't know why, but John Cena with hair actually looks good. Yep. तो most of the scenario में हमको गंजा टाइप जॉन सीना देखने की जरूरत थी नहीं. Ask anyone who doesn't watch wrestling who John Cena is. They'll tell you who he is and where he's from in a heartbeat. Yep. He had That's a true. global appeal. ये पता है मैं क्या एक्सपेरिमेंट करता था. जो अपने क्लास की लड़कियां होती थी ना उनसे पूछता था क्योंकि मेरे को पता था लड़कियां का कम इंटरेस्ट होता है. तो मैं पूछता था कि डू यू नो जॉन सीना. तो दे लाइक यस, लड़ता है ना वो. बस इतना ही पता रहता था उनको. He was the poster child. He was the Hulk Hogan of Oh, India, let's go baby. his generation. वो भी चाइना के ऊपर. And some people, something feels missing. For Yeah. me anyways, because I grew up watching him and he was the one constant on my screen. But no, y'all want to claim. अरे भाई बंदे के उस पे भी केनी ओमेगा. ओके ओके ओके. अच्छा उस वीडियो में इज जॉन सीना रेसलिंग्स फाइनल मेगा स्टार एंड देन पीपल आर सेइंग केनी ओमेगा. यू से केनी ओमेगा कैन बी अ ग्रेट मेगा स्टार. ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट he has to be in WWE in order to prove that. आप NJPW ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं कर सकते. आप कुछ भी कर लो उधर, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ स्टार, लेट अलोन मेगा स्टार. दैट्स फॉर श्योर. WWE में आके ट्राई करो, देन देयर इज अ चांस. Kenny Omega is a mega star and he's this, he's that. No, he's I not. know I just turned heel on all of AEW, but He is not. Kenny Omega is nowhere close And I love Kenny Omega, but I can tell that he's not a big star right now. to John Cena. I've seen this comparison made so many times. Are you kidding me? Kenny Omega isn't even the big. Why John Cena is laughing at my beautiful jokes? So many times. Are you kidding me? Because he understands. Kenny Omega isn't even the biggest star in AEW.
let alone wrestling. This is a joke. That is true. Like John Moxley is the biggest star in all, or maybe Sting. I don't know. Chris Jericho. Neither is Roman Reigns. I'm sorry. Oh, come on. Now you are hitting the mark. Okay. That's too much. Okay. That's too much. I mean, he won't be Cena level when he's done. Reigns is the biggest star in wrestling today. Okay. That's too much. I don't know what to say now. But I understand where he's coming from. Abhi ke liye to, of course, Reigns is the big star. Well, guess what, guys? The next generation won't see a John Cena. So बट ये हमेशा ट्रू रहने वाला. अब आगे वाली जनरेशन कहेगी ओ माय गॉड रोमन रेंस जैसा स्टार बना के दिखा एंड देयर लाइक भाई है तो ये मैट कार्डोना है तो नेक्स्ट स्टार. नहीं मानेंगे लोग. क्या करें. appreciate it now. So 2005 से 8 के बीच में कोई आया नहीं और क्या मोमेंट. आई डोंट नो. खली को हराना भाई क्या मोमेंट था वो. हमारा दिल टूट गया. यो भाई कनाडा में ही लाइक जॉन सीना को बू मिल रही थी. Big time matches against RVD and CM Punk. Oof. When Cena Goosebumps. walked into an arena, CM no Punk, nice. salute, head down, you knew it was about to go down. I don't know why, I just remember it. It's these random moments that you keep in your mind for some odd reason. And I remember that moment जिसमें वो जॉन सीना माइक लेके आता है The Rock और उसका पूरा थोक गिर जाता है. I don't know why I said that. सीधा क्लिप दिखाता हूँ. The Rock. Then there's the matches. और ये वाला मेरे को इसमें पता है कौन सा मोमेंट अच्छा लगा था जब वो जॉन सीना वेड बैरेट को उधर तक ले जाता है रैंप पे और वो पूरी चेयर की जो लड़ी होती है वो सीधा नीचे गिरा देता है वेड बैरेट पे. बेस्ट. ओह कम ऑन दैट इज अमेजिंग. मतलब ये तो बचपन में एज अ मैच तो छोड़ ही दो. ये स्टार पावर ही इतनी भयंकर थी कि इसको तो कोई क्या ही मिस करेगा. CM Punk versus Cena at Money in the Bank, Cena versus Lesnar, oh yeah. The triple threat match at Royal Rumble 2015, Cena. What about John Cena versus The Undertaker WrestleMania 34? You fanboy, you don't say about John Cena versus Undertaker. Versus Rock, both of them. I'm running out of breath. Oh, Cena Styles. I could go on. Wait, what is? Oh, acha, wo debut. On forever, and y'all said the dude couldn't wrestle, eh? Cena was simply a big. Like John Cena cannot wrestle और ये भी है कि John Cena is a Pikachu because he has only 5 moves. Wow, that's interesting. Game player. When the moments were big, he delivered. In the ring. But he can say that right ना कि Kenny Omega को the things that you can do with 200 moves, I can do better with 5 moves. On the mic and everywhere in between. Okay, in all fairness, John Cena खुद पहले से कह रहा है कि मेरे पास 5 ही मूव्स है. देखना है तो देखो वरना मत देखो. तो कम ऑन इसमें गलती किसकी है. हमारी गलती. Constant dedication to WWE. This guy weekend. Bro, dedication I think is the word. Is the right word जिसकी वजह से वो उस पोजीशन पर है. People don't understand कि टॉप पोजीशन पर जाने के लिए क्या लगता है. And it's dedication. And Vince McMahon ने भी कहा ये चीज के I don't know, विंस ने कहा है किसने कहा है कि जब भी विंस मैकमैन को जरूरत होती है 24 आवर 7 days a week जॉन सीना is always ready to do this stuff. So, and that's the like quality जो कि आपको एक टॉप स्टार में चाहिए. Doesn't matter if you cheered him or you booed him, he showed up to work. He was signing autographs at 4 a.m. in the airports. So that you can sell those autographs on eBay. ये बहुत बोरिंग डायलॉग. I don't know why wrestlers still use to this day. अभी मैंने रिसेंट में पता नहीं किसका सुना था. स्मैकडाउन में था या रॉ में था. I'm like भाई मत करो ना. ये बहुत पुराना. फिफ्थ ग्रेड में हो क्या तुम लोग? एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हो क्या? Everything in his power. A lot of people don't want to admit it, but Cena deserves to be the first 17-time world champion. For all no! It's Orton! Are you kidding me? Don't get me on started with Orton. Okay? And he is a legend, and I think when he retires, he has to have that accolade with him. Number 17. Okay, number 17. I think that's a very great debate. And I feel like कि सबको एक बार 16 पे आना चाहिए, then लड़ना चाहिए. Like Triple H, बटिस्टा तो खैर नहीं, रैंडी ओर्टन, you know, इन दोनों को एटलीस्ट 16 तक आना चाहिए. देन इनके बीच ट्रिपल थ्रेट हो क्या मजा आएगा. John Cena has to be the first in case. But Randy Orton is not doing Fast and the Furious, so guess who is the chance, bro? Clearly exemplifies the talent he has. Talent है, but schedule नहीं है. Schedule is the important part here. The sheer mention of his name. Oh my God, Shade. He said true head of the table. Bro, are you betraying us? Are you betraying the tribal chief? The conversation for the GOAT comes up a lot, and that term is thrown around a lot. GOAT is the like
मोस्ट स्टूपिडियस्ट वर्ड राइट नाउ, क्योंकि अब वो उसकी डेफिनेशन खत्म हो चुकी है. लाइक पीपल आर सेइंग गोट्स टू यूट्यूबर्स. Oh my god, that YouTuber is a goat. So that just justifies the legitimacy of that word. Wrestling, that's all up to everyone's own opinion. But for me, it's John Cena. For the simple fact that he left a lasting impact on my life. Whether I was 5 or when I'm 55, I'll see John Cena and I'll get chills. No, you can't see, bro. All the memories of my childhood, Trust me. all the trouble I got myself into, all the matches, the moments, the legendary run to the ring will bring me Wait, back. which WrestleMania was this? Is this 34? Matches. Oh, it's 30. It's Bray Wyatt match, okay. Is the moments, the legendary run to the ring. I would always hear when I was younger, oh you. I think बंदे की एक्टिंग तो बढ़िया थी. So even though you were not a fan, you were watching him. कि भैया होने क्या वाला है. तो that's the interesting part. Make these connections with people. Oh, you have these people who impact your life and this and that. I was like, yeah, okay, bud. John Cena is. Here is the most unfunniest guy, Jimmy Fallon. And in recent years, he's slowly going full. भाई वो बंदा खुद अपने जोक्स पे हंसता है यार. कभी कभी जोक भी नहीं होते तो भी हंसता है यार. क्या करें? He brings a shock of energy to Yes, my guy CM you Punk. boo him, you react to him. There won't be another dude who I'll be able to grow up with. There won't be another wrestler who brings out that emotion. You know what और कौन होगा जो second नहीं होगा? Roman Reigns and Austin and Rock and everybody. Me that he did. There won't be another time at the playground where I get myself into so much just to do it all over again. John Cena was, is, no. special. I understand. From the bottom of my heart to my favorite wrestler of all time. John Cena has to be the goat of this industry. But I guess this is a very emotional video, right? And मैं थोड़ा emotional video से थोड़ा दूर रहता हूँ wrestling के industry में. Because ठीक है भाई वो अपना काम कर रहे हैं. We know कि like backstage, अगर मैं backstage में होता ना मैं definitely करता ये सब. अरे भाई आपकी तो क्या काम किया आपने. But as a fan, I don't want to, because उससे मुझे पता है कि यार मेरा ही fun ruin होने वाला है in the end. But yeah, overall I think it was a entertaining video, and I hope कि copyright ना मारे WWE. Overall भाई बंदे ने बड़ा अच्छा collection, मतलब हर चीज़ खोद के निकाली. कभी कभी मिस हो जाती है ना चीज़ें. हुई है मिस, I know. सीना वर्सेस अंडरटेकर के बारे में ऐसा उतनी बातें नहीं करी. But yeah, that's it, I guess. Okay, इस वीडियो का अगर मेरे को रेट करना होगा, रेट करना चाहिए क्या किसी और यूट्यूबर को? भाई उस बंदे ने परमिशन दिया रिएक्ट करने की, मैं नहीं कर रहा रेट यार. दैट वुड बी वेरी वियर्ड. ठीक है ना? तो 5 out of 5, ओके. 5 out of 5 वर्ड लाइफ, ओके. या लेट्स गो वर्ड लाइफ. दिस टी शर्ट रिस्पेक्ट, अर्न इट. आई एम अ रोमन फैंस दो. मतलब मैं सही में रोमन का फैन हूँ. तो दैट्स डिसरिस्पेक्टिंग फॉर रोमन रेंज. कि अबे तू मेरा फैन बोल रहा है लेकिन पहन तो जॉन सीना की टी शर्ट रखा है. भाई क्या करे यार. तो आई थिंक या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनी हो, एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आई हो. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. और साथ ही कमेंट्स में ये भी लिख के बताना कि बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए या नहीं, बिकॉज मैं देख रहा था कि यार काफ़ी लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक से भी दिक्कत है. सो बताना वो भी.